Sharanam Sharanam Gachami.
My name is Shraddha Sharma, and I welcome you all to the 7 p.m. class. And before we begin the class, I would like to officially welcome Paramji by doing three Paramnads. Mm, mm, mm. So, for those who do not know, I am Bharti Sharmaji's elder son, and by qualification, I am a postgraduate. By profession, I am working as an editor in a company in Gurugram. And with the blessings of Paramji, I have had my different kinds of wishes fulfilled, and those wishes vary from different aspects of life, be it from my student life, then to my college life, then to my first job, and then moving on to the next jobs and for better increment promotions in the continuing jobs, then my married life, then for the studies and the health of my child. So these are the different areas where I have done P3Y, and with the blessings of Paramji, all my wishes have been fulfilled till date. Now, what is the simple process that you need to know to get your wishes fulfilled, and what kind of desires can you get fulfilled through the system of P3Y? I am about to explain you on that. P3Y is made up of three P's and one Y. The first P is Paramji. This is the universally accepted photograph of Paramji. Paramji is no Guru, Swami, Maharaj, or Bhagwan. In the system of P3Y, you need not do any vrat, upavas, or fasting, or any path or yagya, or you can continue to believe in your religious gurus, in your gods and goddesses, and along with that, you can gain benefit from the scientific process of P3Y that Paramji laid out for us. Now, what that scientific process is to get our desires fulfilled, that falls under P2, the second P of the system of P3Y. The second P is papr. It is a set of 11 sentences which have to be spoken in a specific order to get our desires fulfilled. I will elaborate on that in a little while. The third P of the system of P3Y and Y is Yog. So the third P is Param and Y is Yog. The processes in our system, in our body, are controlled by our mind, our brain. So, in times of need, for us to be able to thinking straight and for us to be able to assess that this is exactly what I want in this hour of need, this is what I would like to seek Paramji's blessings for. So for that to happen, we need to have our mind calm, we need to be thinking straight, we need to have a full concentration on the task that we would like to seek Paramji's blessings for. And how can you channelize your energy? How can you focus? How can you concentrate? This is the outcome that you can get from the simple process of Param Yog.
by breathing in air and by exhaling it in the specific body posture, and then you'll be able to actually assess that this is what I want. And once you know what it is exactly that you want, you can speak that in the 11 sentences of P2 Papra, and with that you can get your desires fulfilled. Now, what those 11 sentences of P2 Papra are, I'll tell you about that now. The first sentence is Parmam Sharanam Gachami, Hansam Sharanam Gachami, Advaitam Sharanam Gachami, Anandam Sharanam Gachami, Charanam Sharanam Gachami. हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ. Once you speak these 8 sentences, then you need to bow down and welcome Paramji in the Namaskar position. Across the world, whatever language you speak, these 8 sentences have to be spoken as is. There is no interpretation of these sentences, there is no meaning of these sentences, and you cannot jumble the order of these sentences. This is a kind of phone number to dial and get a connection with Paramji. To get connected with Paramji, these 8 sentences have to be spoken in this correct order only, and with the correct pronunciation that I just had. Once you do that, you will have established a virtual connection with Paramji. Then you move on to the ninth sentence. Is the thing that you have to speak in the ninth sentence? It is the desire that you would like to seek Paramji's blessings for. Now, the desires for which you have tried to put in all your efforts, and despite that, you have not been able to achieve or get the outcome that you would like. For those desires, you can do P3Y. I mean to say is that only when you are wanting to put in all your efforts with all sincerity, it is only then that Paramji's powers will work for your benefit. If you are not sincere, if you are not willing to put in the best efforts that you can for that desire, Paramji's powers will not work for your benefit. It is only when you are entirely sincere, then Paramji's powers will work and those desires will be fulfilled. What else? Any desire that you might have that would cause harm to somebody else, that kind of desire will not be fulfilled in the system of P3Y. Paramji will not grant you that desire. So, with the system of P3Y, you can seek Paramji's blessings for your own benefit, but you cannot cause harm to somebody else. This is a scientific process that will work only for your benefit. Now, once you speak your desire that you have in the ninth sentence, then you move on to the 10th sentence and the 11th one. The 10th is, as soon as my desire is fulfilled in Pakar, I will pay 1 rupee to Paramji. The 11th sentence is, as soon as my desire is fulfilled in Pakar, I will tell to one new person about the system of P3Y. Now, the numbers that you commit in the 10th and the 11th sentences, that is, the amount that you commit to pay to Paramji and the number of new people who you commit to tell about the system of P3Y. These numbers will change depending on the type of desire you speak in the ninth sentence. If it is a small desire, the commitments that you are making in the 10th and the 11th sentences need not be high. But if the desire that you are speaking is of very high criticality, it is very important to you, you would like the desire to be fulfilled soon, quickly, and without any further problems,
then automatically the commitments that you make in the 10th and the 11th sentences have to be on the higher side. But again, Paramji has simplified this process for us a bit, wherein if you are not in a position to pay a higher amount, commit to pay a higher amount, then you can commit to tell a higher number of new people. But if you are not in a capacity to go out and talk to more number of new people and tell them about the benefit of P3Y, then you can commit to tell a lesser number of new people, and automatically the amount that you commit to pay to Paramji in lieu of that desire, that will be on the higher side. So you'll have to decide and maintain this balance. So if it is the commitment in the 10th sentence that you are making on the lower side, then the commitment in the 11th sentence will be on the higher side, and vice versa. It will be you who will be deciding what is the numbers that you will be committing in the 10th and the 11th sentences. And the key word to note here is committing. All you need to do is you need to make a commitment to Paramji. And only when you feel that Paramji has granted you your desire, then you need to fulfill those commitments. So, in the scientific process of P3Y, there is no cheating of any kind. It is only when you are getting your desires fulfilled, when you are getting what you actually want, then you need to honor the commitments that you have made. So it is again a type of fee that you are paying to Paranji only after your desire is getting fulfilled and not before that. A few people would feel that what I am saying is a repetition of what I have already said in the previous classes. Let me tell you that in the words of Paramji itself, this set of 11 sentences is the entire thing. The power to get your desire fulfilled lies in these 11 sentences. These sentences will never change. Only the desire you speak in the ninth sentence and the numbers you commit in the 10th and the 11th sentences will change. Rest of this will remain same as is for whatever desire you have. So sometimes people feel that how can a scientific process that is helping us out, be so simple? We have not had the need to actually go out, go to temples, go to different religious places, do something that is a little uncomfortable, or put in some additional efforts to get our desires fulfilled. We did not have the need to fast, we did not have the need to actually do any uh, havans or kirtans at our home, and we did not have to hold any religious gatherings at our houses. And with not having done any of these, just by speaking these simple 11 sentences, can our desires get fulfilled? So the answer to this question is yes. And to see if this system works for you, you will have to try it for yourself. And once you see that yes, this is the scientific process that is working for you, so then all you need to do is follow this. And for one desire that you have, you just need to speak these 11 sentences once. These are no mantras that you have to chant repeatedly throughout the day. For one desire, all you need to do is speak them once. That is it. And then, depending on the correctness of the commitments that you have made in the 10th and the 11th sentences, and the type of desire you have spoken in the ninth sentence, Paramji will be granting you your desire. This is the simple process to get your desires fulfilled.
The next part to the system of P3Y, as I mentioned earlier, is PY Param Yog. Now I'll tell you a bit about that. What Param Yog is? It is a simple process of inhaling air and exhaling air, which has to be done in a specific body posture. What that posture is, I'll tell you that now. You will have to keep your backbone straight, your neck straight, your forehead straight. The process of Param Yoga has two parts to it. The first is Param Swas, the second is Param Nad. In the process of Param Swas, you will have your eyes open. In the process of Param Nad, you will have your eyes closed. In both the processes, you will not inhale air through your nose. You will have your lips open, teeth will remain one on top of the other, and you will take in air through your mouth. Once you have taken a normal amount of air, then you will remove the teeth from one on top of the other. You will close your lips and you will exhale air through your nose. In the process of Paramswas, while exhaling air through your nose, you will not make any sound. In the process of Paramnad, when you are exhaling air, you will make a humming sound just like a bee. This way, you'll be able to channelize your energy properly, you will be able to focus better, and you'll be able to get your head straight to be able to think right. And when you are thinking right, only then you'll be able to actually assess what your need is. And depending on that, you have to speak your desire in the 11 sentences of P2 Papra. I'll show you how one each of Param Swas and Paramnad are to be done. I'll repeat the body posture quickly. You will have your backbone straight, your neck straight, your forehead straight. First, I'll show you Param Swas. Eyes will remain open. You will not take in air through your nose. You will have your lips open. Teeth will remain one on top of the other. Take a normal amount of air. Close your lips. Exhale through your nose. I'll show you how it is done. Me taking in air through my mouth once and then exhaling it through my nose, this entire cycle is one param swas. So in one sitting you can do a minimum of 3 and a maximum of 10. Now I'll show you how a paramnad is done. Again, you will have your backbone straight, your neck straight, your forehead straight. You will have your eyes closed. You will not inhale through your nose. You will have your lips open, teeth will remain one on top of the other, and your tongue will remain as is. You will take a normal amount of air through your mouth, close your lips, exhale through your nose while making a humming sound. Mm. Again, the entire cycle of taking in air through the mouth and then exhaling through the nose while making a humming sound. This entire process is one round of Paramnad. In one sitting, you can do a minimum of 3 and a maximum of 10. The longer is the duration of your humming sound, and the higher is the pitch of that, the better will be the relief, the outcome that you feel from doing this process of inhaling air and exhaling air. You will automatically feel that your mind is becoming a little more focused. You are able to think straight. You are able to channelize your energy properly. And it is especially for people who have any mind related problems, brain related problems. It is especially for those people who feel they are anxious all the time, who feel that they are not able to concentrate properly. They have a short attention span towards things. For people of who are facing those kind of problems, this process of Param Yoga is very beneficial.
With this, I have explained in detail about what the three P's and Y of P3Y are. Now, I would also like to tell you about one of my recent experiences that I had, which has actually reinstilled my faith in the scientific process that Paramji laid out for us. I have been doing P3Y. Right now I am 33 years old. I, to the best I can remember, I think since the age of 2 or 3 years old, I have been doing P3Y. So from then till now, I have had different experiences. One of the recent experiences was that in my job, uh, there were some difficulties with the which with the blessings of Paramji got resolved, and an opportunity came my way wherein my immediate reporting boss was going out of the system, due to which the management decided that I am worthy of being given the opportunity to go grow in the system and move into the role that my superior was having earlier. But due to some developments within the team, uh, that opportunity was offered to me, but then the management had to kind of redact it, and I felt very bad because in spite of having put my all sincere efforts and without having been given a chance to prove if I am worthy for the next level position that I was originally offered, the opportunity was redacted, it was cancelled, and now I'll not be able to showcase my skills and prove that yes, I am worthy of that opportunity. So I was feeling pretty upset. Then I sat with Bhartima, I did Papra, and I asked for Paramji's blessings that Paramji, uh, whatever these problems are, whatever the developments are at the office, I explained those in the ninth sentence in detail. I told to Paramji about that. Then I asked for Paramji's blessings that those problems get solved and the favorable position is offered to me, the condition, the environment around me and my equation with the superiors and the system becomes positive, and that opportunity is offered to me again so that I can put my skills to use and I can prove that I am worthy of being given that opportunity. And within a span of just 2 days of me having said this desire in the ninth sentence of the 11 sentences of P2 Papr, the situation at my workplace changed. And again, the conditions around became favorable, and now I am actually asked to work in the role that I was originally offered, and things have changed altogether and have worked out to be in my favor. So it is only with the blessings of Paramji that this opportunity originally came my way. Then the thing is that whatever is written in my destiny will also come to me. However, if there is a negative impact of whatever is written in my destiny, with the blessings of Paramji, the impact of that can be reduced or nullified, and the effect of positives can be amplified. So, this is my recent example, my experience that I wanted to share with you, so that you people can also get to know that
This is another area wherein you can do P3Y, you can test Paramji's powers, you can check that yes, they would also work for your benefit. So this is one of the experiences, and with this now I'll be stepping aside, and Bhartima will be taking over, and she'll be guiding you further. So kindly hold on for a minute. Chanam Shanam Gachami. चरणम शरणम गच्छामि। सर्वप्रथम परम जी का स्वागत। तो चलिए, अभी हमने सीखा श्रीधर शर्मा जी से पीछे फॉर न्यू पर्सन, और अब हम लेंगे क्लास में शक्ति और लाभ लेंगे, माँ के साथ वापर करेंगे और लाभ लेंगे। तो न्यू पर्सन्स को आपने, जिसको भी आप पीछे बताना चाहें, आप उनको ये क्लास का लिंक अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कल होने वाली 15 अगस्त भक्ति माँ संपूर्ण क्लास, उसकी जानकारी आप अधिकतम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सुबह ऑनलाइन क्लास 11 बजे का रहेगा, लेकिन जो लोग परम धाम, सॉरी, जो लोग महाराजा अग्रसेन भवन में ये क्लास अटेंड करने वाले हैं, सुबह 10:30 बजे तक महाराजा अग्रसेन भवन पहुंच जाएं। जो लोग विद इन फरीदाबाद हैं या एनसीआर इंडिया के आसपास हैं, तो साथ ही में आपने अधिकतम लोगों को शेयर करना है P3Y निमंत्रण पत्र, जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। P3Y का 15 अगस्त का पोस्ट अधिकतम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से, जिन लोगों को आप शेयर कर चुके हैं उन लोगों को एक बार फिर से ये निमंत्रण पत्र और पोस्ट एक बार फिर से उनको रिमाइंडर, एज ए रिमाइंडर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आप सभी जानते हैं, कल सामूहिक रूप से हम परम प्रतीक भी सिद्ध करेंगे। तो जिन लोगों के पास परम प्रतीक आ चुके हैं, जिन्होंने मंगाए थे और जिनके पास पहुंच चुके हैं, और जो ऑनलाइन ही क्लास अटेंड करने वाले हैं, तो वह अपना परम प्रतीक, या ऑफलाइन अटेंड करने वाले हैं तो अपना परम प्रतीक साथ में रखें, हम उन्हें को सिद्ध करेंगे। और साथ में जो लोग क्लास अटेंड करने वाले हैं परम धाम में, तो ज़रूरी है, परम धाम में नहीं, महाराजा अग्रसेन भवन में आप लोग प्रोटोकॉल्स का, कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखें। मास्क पहनकर अवश्य आए, क्योंकि ये इस बार थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है ये, तो इसलिए आपने कोरोना प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान रखना है और क्लास को भी अटेंड करना है। P3Y परम जी के नियमों के अनुसार ही क्लास को अटेंड करना है। तो निमंत्रण पत्र पर P3Y क्लास अटेंड करने से संबंधित कुछ नियम्स भी लिखे हुए हैं, कुछ नियम भी लिखे हुए हैं कि उन नियमों का पालन करते हुए ही हमें ये क्लास अटेंड करनी है। जैसे कि अपना क्लास में एंटर करते ही हमें अपना फ़ोन साइलेंट पर या स्विच ऑफ करना होता है, और अपने साथ अपने शूज़ व चप्पल को कैरी करने के लिए बैग रखना होता है। साथ ही में यदि 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो क्लास में पीछे की तरफ स्थान लें, या फिर हो सके तो क्लास में आप ऑनलाइन ही क्लास अटेंड करें। परम धाम में महाराजा अग्रसेन भवन में यदि क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप वहां पर भी पीछे की तरफ में ही बैठिएगा। बाकी ये सब नियम आपको महाराजा अग्रसेन भवन में पहुंचकर भी बताए जाएंगे एक बार फिर से, परंतु आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको मास्क पहन कर आना अनिवार्य है। तो चलिए, अब हम माँ के साथ पापर करेंगे, लाभ लेंगे, और जो भी एक कल का क्लास अटेंड करने वाले हैं, एक बार फिर से आप लोगों को एक इच्छा पत्र का रिमाइंडर और दे दूं कि आपको इच्छा पत्र भी अपने साथ रखना है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि माँ के द्वारा इच्छा पत्र को भी अर्पण कराया जाएगा। साथ में आपने रखना है भोज, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, मंच बना रखे हैं, जिन्होंने मंच बनाकर ये क्लास अटेंड करने वाले हैं, तो पीने और छिड़कने का जल साथ में रखना है। साथ में परम जी को अर्पण करने के लिए भोज और भेंट भी अवश्य रखना है, जिससे हम
अधिकतम स्वस्थ रहने की शक्ति हम ले। तो इसके लिए परम जी को हम कुछ भोज और भेंट भी अर्पण करेंगे और उसका भी व्यवस्था आपने समय से ही कर लेनी है। तो चलिए अब पप्र करेंगे और आज की क्लास का लाभ लेंगे। माँ के साथ पप्र करेंगे और परम जी से निवेदन कि माँ के साथ किया हुआ पप्र हमारे लिए खूब सुंदर सुखद अनुभव लेकर आए। तो ऐसा परम जी से निवेदन। शरणम शरणम गच्छामि। शरणम शरणम गच्छामि माँ। हाँ जी, तो चलिए सर्वप्रथम परम जी का स्वागत। और क्योंकि अब तो क्लास लगभग समापन पर है, लेकिन मेरा तो नियम है ही ना कि हमें P3Y करने में सर्वप्रथम परम जी का स्वागत करना है और 3 परमनाथ करके ही अपना जो भी काम हमें करना है हम काम करते हैं। तो अभी हमें क्या काम करना है? जिस प्रकार से आज सुबह हमने 11 बजे की क्लास में कितने सुंदर सुंदर लाभ लिए हैं। हमने परम जी भक्ति मास के 30वें दिन का लाभ तो लिया ही है, साथ ही में हमने P3Y लक्ष्मी स्मृति पप्र करके हमने धनी बनने का भी लाभ लिया। और देखिए कितने सुंदर तरीके से हमने आज के सुंदर कजली कजली तीज का इतना सुंदर सा लाभ भी लिया। तो अब हम शाम 7 बजे की इस P3Y क्लास में भी जिन्होंने सुबह लाभ ले लिया है वो तो ले चुके, लेकिन अब जो परम जी भक्ति मास अटेंड कर रहे हैं तो वे अपनी इच्छा तो बोल ही देंगे, लेकिन साथ ही में यदि कोई भी आज यदि चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी बढ़े, आमदनी बढ़े, बरकत बढ़े, तो आप तो जानते ही हैं परम जी की वाणी, परम जी के चरणों में, परम जी की वाणी में लक्ष्मी का वास है। तो आपको अपनी अपनी इच्छा अपने अपने मन में बोल देनी है, ठीक है? तो चलिएगा, अब हम करेंगे 3 परमनाथ और साथ में हम करेंगे पप्र। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार परम जी। बोलिए परम जी, परम जी, आज परम जी भक्ति मास के आज परम जी भक्ति मास के 30वें दिन की 30वें दिन की शाम 7 बजे की P3Y क्लास में शाम 7 बजे की P3Y क्लास में अपनी विशेष शक्ति दो। अपनी विशेष शक्ति दो। आज की यह क्लास आज की यह क्लास जो भी अटेंड कर रहे हैं, जो भी अटेंड कर रहे हैं, अटेंड करने वाले हैं, अटेंड करने वाले हैं, सभी को सभी को P3Y से P3Y से अपनी इच्छा पूर्ति की शक्ति मिले। अपनी इच्छा पूर्ति की शक्ति मिले। हमारी आज की विशेष इच्छा है। हमारी आज की विशेष इच्छा है। चलिए, तो मन ही मन अपनी इच्छा बोलनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो परम जी भक्ति मास किसी विशेष इच्छा से अटेंड कर रहे हैं तो वे अपनी इच्छा बोलेंगे, और जो धनी बनना चाहते हैं तो वे अपनी इच्छा, मेरे काम में, व्यापार नौकरी में आमदनी बढ़े, और जो अपनी विद्यार्थी अपनी इच्छा के लिए, तो सब अपनी अपनी इच्छा अपने अपने मन में परम जी को बोल दीजिए।
आपने अपनी इच्छा बोली और अब हम सबकी सामूहिक इच्छा, क्या हम सबकी इच्छा नहीं होगी कि हमारा परम जी भक्ति मार्ग कल संपूर्ण होने जा रहा है? तो क्या हम सबके सामूहिक इच्छा होगी ना कि यह संपूर्ण शिविर बहुत ही सुखकारी और सफल रहे? इच्छा है ना? तो चलिए बोलिए परम जी। कल 15 अगस्त 2022 को परम जी भक्ति मास संपूर्ण शिविर खूब सुखकारी रहे, सफल रहे। जो भी यह क्लास अटेंड करें उन्हें पूरे माह की बोली गई इच्छा का लाभ जल्द मिले। कल का उत्सव खूब सुखकारी रहे। जो भी आकर क्लास अटेंड करें महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 19 में, फरीदाबाद में, या जो भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करें सभी को खूब लाभ मिले। कोई नेटवर्क या टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, अन्य कोई समस्या ना हो। सभी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से खुश होकर अपनी इच्छा बोले और खूब लाभी बने, सुखी बने। P3Y का प्रचार करके स्वयं सुखी बनकर पूरे देश को P3Y सिखाकर सभी को सुखी बनाकर खूब अच्छी देशभक्ति दिखाएं। हमारी यह इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अब मन ही मन भेंट राशि आपको स्वयं से बोलनी है अपने बोली गए लाभ इच्छा के लाभ के अनुसार। परम जी को दूंगी, 1 लीटर जल चढ़ाऊंगी, 1 पुष्प चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। शरणम शरणम गच्छामि। हाँ जी, तो अभी हमने सुंदर तरीके से ना केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अभी तो कल के आने वाले सुंदर दिन के लिए भी हमने लाभ लिया। अब मान लीजिए सबने बरकत कार्ड सुबह रिचार्ज कर लिया है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अब यदि किसी का बरकत कार्ड रिचार्ज होना रह गया तो आप चैट में लिख दीजिएगा, कृतिका जी जरूर अर्पण कराएंगी। ठीक। दूसरा, आप जानते हैं कल मंच की तैयारी, तो मंच तैयार करना है, चंदन पुष्प और साथ में लेकर के बैठना है सामूहिक सिद्ध करने के लिए परम प्रतीक, जिस और साथ में स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सुंदर सा भोजन और साथ में भेंट, ये हमें रख करके ही बैठना है। और इसके साथ ही में मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा लाभकारी सुखकारी वो है इच्छा पत्र, तो आपको बना करके अभी ही रख लेना है। ठीक है, तो चलेगा। अब बाकी कराएंगी कृतिका जी परम धाम से ही। तो कृतिका जी अब आगे का क्लास आप लीजिएगा। पीने का जल भोज भेंट आप सिद्ध करना चाहें तो आप देखते रहिएगा, ले लीजिएगा।
क्षणम क्षणम गच्छामि। तो इस जल में परम जी ने शक्ति दी, इस भोज बीज में परम जी ने शक्ति दी, इनका प्रयोग करेंगे, स्वयं सुखी स्वस्थ बनेंगे, परिवार को भी सुखी स्वस्थ बनाएंगे। तो चलिए आगे का अब क्लास लेंगे कृतिका जी। तो मेरी तरफ से सभी को चरणम शरणम गच्छामि। शरणम शरणम गच्छामि माँ। तो चलिए चैट में कुछ लोगों का आया है कि बरकत कार्ड रिचार्ज नहीं हो पाया है सुबह, तो आप अपना बरकत कार्ड हाथ में ले लीजिए। परम धाम से उसको रिचार्ज कर रही हूँ। चित्र रहेगा आपकी तरफ, बस आप देखते रहिएगा। शरणम शरणम गच्छामि। बरकत कार्ड रिचार्ज हुआ, अब आप इसको रख लीजिएगा। तो चलिए अगला लाभ लेंगे हम प्रार्थना के द्वारा। तो आज की क्लास में प्रार्थना है। चंपापन जी लिखते हैं, परम जी एंड माँ जी की ब्लेसिंग और P3Y क्लास अटेंड करने से सप्ताह पूरा सुंदर और आनंददायक सुरक्षित रहा। थैंक यू परम जी, थैंक यू माँ जी। जी। हरीश जी चौबे लिखते हैं, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। जयंता नारायण साल जी लिखते हैं, परम जी से निवेदन है कि नेक्स्ट ईयर में भक्ति मास में उपस्थित रूप से एंड सबसे ज़्यादा P3Y और परम धाम का प्रचार कर पाऊँ। आपकी कृपा की मैं आशा करता हूँ। जी, बहुत सुंदर। निवेदिता जयंता शाह लिखती हैं, प्रणाम माँ को पर भी प्रणाम, परिवार में सुख शांति धन समृद्धि के लिए प्रार्थना। थैंक यू परम जी, थैंक यू माँ जी। करण बब्बर के डाइवोर्स केस जल्दी कम खर्च में सॉल्व होने के लिए परम जी से प्रार्थना। मेरे दोनों बेटों को परम जी से प्रार्थना है पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगे। मेरे फादर इन लॉ डीवी आनंद की हेल्थ में फास्ट रिकवरी के लिए परम जी से प्रार्थना। युक्ति आनंद जी की तरफ से। रितु बब्बर की तरफ से करण के काम जल्द होने के लिए शॉप में बरकत के लिए परम जी से प्रार्थना। शिवांश रखते हैं, मेरी मम्मा के पेट का प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए परम जी से प्रार्थना। डिम्पू राणा लिखती हैं, परम भारती माँ को मेरा परम जी और भारती माँ को मेरा पूरा परिवार अर्पण। परीक्षा लिखती है, थैंक यू माँ जी फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस P3Y सो वेल। जी। आगे की क्लास में प्रार्थना है। लगभग सभी प्रार्थना मैंने पढ़ दी हैं। हरजीत कौर जी लिखती हैं, हम सबकी सेहत और सद्बुद्धि अच्छी रहे और इनकम में खूब बरकत रहे, परम जी से प्रार्थना। ईश्वर दास बंसल की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना। प्रोमिला कुमारी की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना। सुमित बंसल की जॉब लगने के लिए प्रार्थना। सोनम बंसल की जल्द शादी के लिए प्रार्थना। मेरे और मेरे फैमिली के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। विमलेश कुमार। हमारे परिवार में अनुकूलता बढ़े उसके लिए प्रार्थना। सोनम बंसल। राम दास सावित्री देवी रोगों में राहत मिले प्रार्थना। कल का शिविर सुखकारी सुरक्षित और जो भी अटेंड करें लाभकारी रहे उसके लिए प्रार्थना। संगीता संजय कक्कड़ जी की तरफ से।
जी, बहुत सुंदर। जयश्री भोजानी जी लिखते हैं, परम प्रतीक जो भक्ति मास में लिया है, सिर्फ वो ही रिचार्ज करने की, या लास्ट ईयर लिए हुए भी परम प्रतीक भी रिचार्ज होंगे? प्लीज, जो भक्ति मास में आपने नया परम प्रतीक लिया है वही परम प्रतीक रिचार्ज होगा। जी, चलिए, तो लगभग सभी प्रार्थना मैंने रीड कर दी हैं, परम जी को अर्पण कर रही हूँ। यदि किसी का रह गया हो तो आप मन ही मन स्मरण कर लीजिएगा। परम जी को सभी प्रार्थना अर्पण करती हूँ। परम जी, सभी प्रार्थना आपको अर्पण। जिन्होंने जिस भी इच्छा से प्रार्थना कराई, सभी की इच्छा पूर्ण हो, संकट समस्या दूर हो, स्वास्थ्य बढ़े, सद्बुद्धि बढ़े। क्षणम शरणम गच्छामि। चलिए, तो अब आगे का लाभ लेंगे सुरक्षा जल के द्वारा। तो सुरक्षा जल हाथ में ले लें और जल में देखते रहें। क्षणम शरणम गच्छामि। सुरक्षा जल अर्पण हुआ। अब इसका प्रयोग छिड़कने में करें। और आप सभी जानते हैं, जब हम सामूहिक रूप से जल अर्पण करते हैं या जो जल बनाते हैं, इसमें बहुत शक्ति होती है। इसका प्रयोग करने से ग- चाहे वह पीने का जल हो, छिड़कने का जल हो, लाइव क्लास में बनाने से अधिकतम शक्ति हमको मिलता है। और परम जी का सुरक्षा जल छिड़कने से किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, पितृ दोष या अन्य कोई भी कुप्रभाव हो, नजर टोक का, तो वह दूर होता है। बस आवश्यकता है नियमित रूप से इस जल का प्रयोग करने की और इस जल को छिड़कने की। तो आप देखेंगे कि घर में अनुकूलता भी बढ़ती है और स्वास्थ्य लाभ भी बढ़ता है। तो पहला लाभ अपना लेंगे, अपना अनुभव अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें भी यह क्लासेस अटेंड करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो चलिए, अब क्लास के समापन में तीन परम नाथ और परम जी का धन्यवाद। बोलिए, थैंक यू परम जी। 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 हे परम जी, हे परम जी, अपनी ऐसी ही कृपा, अपनी ऐसे ही कृपा, अपना ऐसा ही आशीर्वाद अपना ऐसा ही आशीर्वाद भविष्य में भी भविष्य में भी मुझ पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, हमारे काम पर, हमारे काम पर, व्यापार नौकरी पर, व्यापार नौकरी पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी सद्बुद्धि पर हमारी सद्बुद्धि पर बनाए रखना। बनाए रखना। चरणम शरणम गच्छा। तो परम जी से निवेदन, आपकी आज की रात और कल का आने वाला दिन खूब सुखकारी रहे। चरणम शरणम गच्छा।